सो सी डियर स्टूडेंट्स, औरंगजेब का सिर्फ इतना ही नहीं है स्टेबल से लर्न करने जैसा. So औरंगजेब ही किल्ड हिज ओन ब्रदर, बिकेम द किंग, ही ऑल्सो हैड फाइट. पर इसका जो शासन था बहुत प्राउडी था, नॉट लाइक अकबर. ये कम से कम औरंगजेब से अकबर की पॉलिसीज़ अच्छी थी. अब कैसे अच्छी थी कि अकबर यूज टू विन द टेरिटरीज, या फिर ही जॉइंड द राजपूत्स, बट ही केप्ट देम देयर रिस्पेक्ट, है ना. ही केप्ट देयर रिस्पेक्ट ऑल्सो. द रिस्पेक्ट ऑफ द किंग्स वॉज नॉट, they were not disrespected by Akbar, but in Aurangzeb's court this happened once Shivaji was insulted, and that insult was taken by Chhatrapati Shivaji very seriously. They escaped from Agra without the knowledge of Aurangzeb, came to Maharashtra. All the troop came to Maharashtra with Shivaji, and what happened? He then declared himself as a king. Not only that, he launched expeditions against Aurangzeb's regime. To this response, Aurangzeb himself with a great force came in Maharashtra to fight with Shivaji. He was so angry that this king in my court of Agra refused to accept the zamindari authority of Delhi Emperor Aurangzeb. Aurangzeb was so angry with this that he came to Maharashtra to win the territory of Maharashtra, but all his life till his death he kept on fighting with Marathas and could not win the Maratha territories. He could not kneel down Chhatrapati Shivaji. In the end, he died in Aurangabad, and after what happened, in his succession, his children also fought against each other and became the king. Now see on the next page, this map is the Akbar's region. Okay, in 65, Akbar's region in this map is shown. Okay, and how Akbar became so powerful and extended his territory, his region. So that is shown in the pink color. Okay, so now the next point is Mughal tradition and succession. In the table we have already discussed that the succession means एक के बाद दूसरा जो राजा बनता था, बाप के बाद पिता के बाद जो बेटा राजा बनता था, वो कैसे बनता था? या तो टू किल द फादर, किल द ब्रदर्स, या फिर टू सेंड देम टू द जेल. सो ऐसे इनका सक्सेशन हुआ. सो द मुगल सक्सेशन इज नॉट करेक्ट. अप टू हुमायूं डिस्ट्रीब्यूटेड हिज किंगडम इन द चिल्ड्रन, बट after Humayun, Akbar, who became the king, he had to fight with his own brothers, and won the territories. Okay, and Akbar did the same, the Mughal quality, right? That Akbar also did the same. Humayun came in the throne with the help of Safavid Khan, Safavid Shah. Okay, so Humayun came in the throne of Delhi with the help of Safavid Shah, and Akbar launched a campaign against Safavid Shah, and defeated Safavid Shah, right? So Safavid Shah, Kandahar, he was ruling in Kandahar. So Kandahar was captured. Kabul and Kandahar was captured by Akbar. Now means Akbar's father had a great friendship with Safavid Shah, but Akbar did not paid attention to that. In the greed of extension of his territory, he launched a campaign against Safavid Shah and defeated him. This Safavid Shah got his kingdom back in the period of Shah Jahan. In the period of Shah Jahan क्या हुआ? Safavid Shah attacked on the Mughal territory and won his territory back. The Kandahar was taken back when Shah Jahan ruled. That is Akbar's grandson. See the Mughal relations with other rulers. Now take the look of table number 1. See what happens.
there it is explained that the Mughal relations at to the time of Akbar with the other kings at some extent were some good, like the Rajputs were they were making the kings to accept their authority, and even after accepting the authority the kings were given respect and honor, right? They were treated honorably up to the time of Akbar. This was not followed in the due course by the other kings, by the other Mughal kings. And the Rajputs got married their daughters with the Mughal families and received high positions. Some of the Rajputs like Sisodia, they refused the Mughal authority. They had a long fight with Mughals, and in that they were defeated. After defeat also they were given their lands back, and they were assigned as Watandar, Jagirdar, and they were treated as Jangidar instead of kings, but they were treated very honorably and with respect. So there was a balance of defeating and humiliating. So they were defeating the kings but were not humiliating them. That was happening up to Akbar, but after Akbar the kings became very proudy. The Shahjahan, Aurangzeb. So in the period of Aurangzeb, once Shivaji was called to accept the authority at Agra, and while accepting the Mansabdari, Aurangzeb insulted Chhatrapati Shivaji in his court. This insult was seriously taken by Shivaji, and he escaped without the knowledge of Aurangzeb from Agra, came to Maharashtra, and then launched a campaign against Aurangzeb, which Aurangzeb could not win throughout his life. Aurangzeb himself, Aurangzeb was too angry. Shivaji was angry with the insult. Aurangzeb was angry as the response of the insult given by Shivaji in the court of Aurangzeb. Even Aurangzeb was replied with an insult only, and that made Aurangzeb angry. And without his knowledge, when Chhatrapati Shivaji escaped from Agra and came to Maharashtra, that made him more angry. He followed with a great army, came to Maharashtra, tried to win Marathas, but he couldn't. And at last he died at Aurangabad, saying that the Marathas can't be won, Maharashtras cannot be win. So now the Mansabdars and Jagirdars were the reason that the Mughal empire extended. Mughals, what they used to do, they used to make the kings and the other rebellions as their Mansabdars and Jagirdars. This Mansabdar was a rank. Mansabdari was a rank that was given to all, whether there were Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas, and other groups. So who joined the Mughal services, they were enrolled as the Mansabdars. This Mansabdari was a high position, it was a rank, it was a grading system in Mughals. So they were given the salary, they were given the military responsibility, and they were given the right to have zamindari also. So and the value of the rank was on Zat. So Zat means it was like a 5,000. A Zat of 5,000 was higher than the rank of 1,000. So Zat means it was a number of salary. It was a number. It was a fixed number. So this much amount will be given in one Zat. So if a Zat is given to Mansabdar, one Zat is given, so that amount will be given. If the Zat is multiplied by 2, 3, then the amount also will be multiplied by 2 or 3. So that was the system of salary and grading. Okay, so the salaries were very high, and the position was very prestigious and very high position in the court. Mansabdar. These Mansabdars were responsible for the military actions. So they used to recruit the Sawar, good Sawar, and cavalrymen. So horses were purchased, and the cavalrymen means the walking troops, Sainik, Pedal Sainik. They were also recruited by the Mansabdars, and to give them salaries, Mansabdars were given Jagir. So a
typical area Jagir was given, and they were collecting the taxes through their servant. They were not going there actually, their servants were collecting the taxes, and those taxes were used by the Mansabdars. Now Mansabdars were busy in their military actions. इट वॉज लाइक नॉट लाइक एकताज, इट वॉज नॉट लाइक ज़मींदार. ज़मींदार कैसे उस ज़मीन पर रहकर टैक्स कलेक्ट करते थे और वहीं पे रखवाली करते थे, तो मनसबदार वैसे नहीं थे. मनसबदार को जहाँ ड्यूटी मिलती थी, जिस एरिया में, टेरिटरी में फाइट करने को जाना होता था, वहाँ पे जाएंगे, एंड जहाँ की जहांगीरी मिलती थी वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे. सो दिस वॉज द पोस्ट ऑफ मनसबदार, राइट. एंड we have seen that the Mansabdars in the period of Akbar were 29, while in the period of Aurangzeb there were 79 Mansabdars. So it means that Aurangzeb का expenditure भी ज़्यादा था और उसका expansion of the regime भी बहुत ज़्यादा हो चुका था. In Akbar's regime, these Jangirs were carefully assessed, and so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. So in the period of Akbar, the revenue and the zat, the salary was properly given, but Aurangzeb regime was no longer the case of actual revenue collected, and it was often less than the granted sum. So वो कुछ डिसाइड करते थे मनसबदारी और उससे कम ही उनको मिलता था. So the Mansabdars were not happy in the period of Aurangzeb. There was also a huge increase in the number of Mansabdar, which meant a long wait before they receive a जागीर. सो सारे मनसबदार इंक्रीज़ हो गए, तो जागीर कहाँ की देंगे, किस एरिया की देंगे. सो सम मनसबदार्स वेर विदाउट जागीर, दे वर हैविंग ओनली पोस्ट, बट दे वर नॉट हैविंग दी टैक्स कलेक्शन. As a result, many Jagirdars tried to extract as much as revenue as possible while they had जागीर. सो इसकी वजह से क्या हुआ, औरंगजेब के पीरियड में शुरू हो गई ब्राइब, भ्रष्टाचार. तो जब वो जागीरदार जो बनता था, वो क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की ओर ध्यान देता था, क्योंकि उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे. औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स, एंड हिज रीजन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली. इसी वजह से औरंगजेब के पीरियड में लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी. द टैक्सेस वेर हाई, एंड द टैक्सेस वेर नॉट actually controlled by Aurangzeb. He couldn't control it, and most of the taxes that he started, Aurangzeb started, were very crucial for the people. Okay, now see, Zabt and Zamindars. The next point is Zabt, and the main source of income available to the Mughal ruler was tax by the peasants, by the people. In most places, peasants paid taxes through the rural elites. This is the headman, जो हेडमन होता था, the local कैप्टन होता था, या फिर सरपंच होता था गांव का, उसके थ्रू this taxes were collected. The Mughal used one term, zamindars, to describe all intermediaries, and whether they were local headmen of the village or powerful captains. So these powerful chieftains and headmen, the one term was there only, zamindar. So उनको जमींदार कह के बुलाया जाता था. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोदारमल, ये सबसे क्रूशियल मिनिस्टर माना गया. कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड्स, prices and areas cultivated for 10-year period, for 1570 to 1518. ये तोदारमल जो था औरंगजेब का, he carried a survey, what is the system, what should be the system of taxes, how much taxes shall we take, and on the basis of that data the tax was fixed on each crop in cash, and then cash में वो the taxes were fixed. Each province was divided into revenue circle, and with its own schedule of revenue rates of individual crops. This revenue system was known as zabt. तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम थी, विच वॉज मेड बाय तोदरमल आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 years period, that is 1570 to 1580, the taxes for each crop for individual were fixed, and that was called as zabt. That was called as zabt. It was prevalent in those areas where Mughal administration could survey
the land and keep very careful account. This was not possible. Now, this was not possible in the province such as Gujarat and Bengal. Now, it was possible where the ministers and they were living in the close places, but to the longer places it was not possible. Like Gujarat and Bengal, it was not possible, but the taxes were fixed same. In some areas, the zamindar exercised a great deal of power. So they exploited the people. The Mughal administration, by the Mughal administration, these people were exploited and could drive them rebellion. So they were in the rebellion. So गुजरात और बंगाल में बहुत ज़्यादा rebellion होते थे against औरंगजेब. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebellion against Mughal authority, and these peasant revolt challenged the stability of Mughal empire from the end of 17th century. And in the end of 17th century, such rebellions of peasants and zamindars, इन्होंने औरंगजेब के एम्पायर को हिला के रख दिया. See in the bracket here, the अकबरनामा और एंड आईने अकबरी, ये एक किताब लिखी गई थी अकबर पे, बादशाह अकबर पे. अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड कोर्टियर अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेजिम. सो अबुल फजल ने अकबर पे किताब लिखी थी. अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑन अकबर्स रीजन टाइटल अकबरनामा, और उसका नाम था अकबरनामा. द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर, सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीजन, एंड थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी. एंड थर्ड वॉल्यूम जो है उसका नाम था आईने अकबरी. इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन. सो उसमें अकबर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता था, दैट वॉज गिवन. ओके, सो it deals with Akbar's administration, household, army and revenue and geography of his empire. It also provides rich detail about the tradition and the culture of the people living in India. The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical details about the things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. सो आईने अकबरी में बहुत सारे डिटेल लिखे गए थे कि रेवेन्यू कितना आता था, कैसे कलेक्ट होता था, क्या क्रॉप सिस्टम थी, किस तरह से वो यूज़ होता था. सो दैट इज़ ए बुक, थर्ड वॉल्यूम, दैट इज़ आईने अकबरी. ए क्लोजर लुक ऑफ अकबर पॉलिसीज. व्हाट वाज अकबर पॉलिसीज, दैट विल सी. सी, Akbar was somewhat milder Mughal emperor. All the Mughal emperors were not good. In that, Akbar was too the same, because what Akbar did with Sabdavi's Shah, that proves that the and other rulers also. So, but some policies of Akbar, those are discussed here. The broad feature of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book in the Akbarnama. In particular, in its last volume, Aine Akbari, the administration is described. Now see, Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subhas. subha यानी जगह, governed by सुबेदार. सो उसको सुबेदार, उस जगह का जो गवर्नर होता था, सरदार होता था, उसे कहते थे सुबेदार. who carried out both political and military function. Each province also had a financial officer, that was दीवान. सो हर प्रोविंस, हर टेरिटरी का एक सूबेदार होता था, एक दीवान होता था जो फिनेंशियल लिखता था. फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय हिज ऑफिसर सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बख्शी. तो एक एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए उनका मिलिट्री असिस्टेंट होता था, उसे कहते थे बख्शी. सो एक प्रोविंस में कौन हो गया, सूबेदार हो गया, दीवान हो गया, बख्शी हो गया. एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सदर. सो एक सदर होता था जो रिलीजियस थिंग्स को देखता था. मिलिट्री कमांडर्स वॉज फौजदार, और जो मिलिट्री को एक्चुअल सेनापति होता था उसको कहते थे फौजदार. एंड द टाउन पॉलिसी कमांडर वॉज कोतवाल, लाइक ए पुलिस ऑफिसर. सो हु विल लिव इन द टाउन एंड विल सी द मैटर्स ऑफ द पीपल. सो दैट वॉज कोतवाल, कोतवाली. सो उसके पास कोतवाल होता था. तो इतने सारे प्रोविंसेस में
एक टेरिटरी में इतने सारे अकबर के टाइम में ऑफिसर होते थे। सी नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अब जहांगीर के कोर्ट में नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस, नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी। सी मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। So Mehrun-Nisa married Jahangir and received the title Noor Jahan. So Noor of Jahangir. So she received a title Noor Jahan. She remained extremely loyal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own title on one side and on other inscription stuck in the name of Queen Begum Noor Jahan. So इस वो इतनी शी दैट मीन्स जहांगीर लव्ड हिज वाइफ सो मच दैट ही मेड ए कॉइन। इसने एक कॉइन बनाया था जिसमें एक साइड पे नूर जहाँ का नाम था, बेगम नूर जहाँ, और दूसरी साइड पे उसका खुद का नाम था जहांगीर का, तो सिक्का बनाया था, है ना। और ये नूर जहाँ का ही बेटा था शाहजहाँ, तो इसने उसकी वाइफ के लव में ताजमहल बनवाया था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर ऑफ नूरजहाँ। सो अभी ये जो डॉक्यूमेंट दिया है नूरजहाँ फरमान, सो नूरजहाँ भी ऑर्डर देती थी, उसको भी राइट दिया था, उसकी ऑर्डर का ये डॉक्यूमेंट है, उसने कुछ ऑर्डर दिया है, वो लिखा है उर्दू में। दी सिक्योर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम, एंड उसके साइड में एक जो ब्लैक स्पॉट है राउंड वाला, वो क्या है? उसके सील है, उसको सील है, स्टैम्प है। एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ नूरजहाँ पातशाह बेगम। सो द कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ पातशाह बेगम। द राउंड सील स्टेट्स, द राउंड सील, उस पर क्या लिखा होता था? कमांड ऑफ, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ बेगम, ऐसा उस पर लिखा हुआ है, वो जो ब्लैक कलर का स्टैम्प है। The round seal by the son of Shah Jahangir, and the round seal is the son of Shah Jahangir. She became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Pasha be the lady of the age. So this is the फरमान, उसका फरमान है, उसने कुछ फरमान दिया होगा और इस तरह से उसका स्टैम्प होता था उस फरमान पे, इस तरह से उसकी तारीफ़ लिखी हुई होती थी, है ना, उसका स्टैम्प। तो पहले भी स्टैम्प बनते थे जैसे आजकल प्रिंसिपल का स्टैम्प होता है, कलेक्टर का होता है, तहसीलदार का होता है, सबके स्टैम्प होते हैं ना, उनका पोजीशन लिखा होता है, कौन से इंस्टीट्यूट के वो लिखा होता है। वैसे तब उसके ज़माने में स्टैम्प होता था राजाओं का, बड़े ऑफिसर्स का। Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal to the empire, functioned efficiently, but by the end of the 17th century, देखो ये अकबर के जो वर्कर्स थे ये बहुत लॉयल थे, हाँ, एंड देयर लॉयल्टीज इन द 17th century, इन द एंड ऑफ द 17th century, देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वेर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। बाद में ये जो बनाए गए थे सूबेदार वगैरह, ये सेल्फिश हो गए, ये अपना कलेक्ट करने लग गए, ब्राइब्स यानी भ्रष्टाचार हो गया, तो वो उनको सेल्फिश होने की वजह से पावर जो था एम्पायर का, अकबर का, कम हो गया। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग 1570, एक सिटी थी उस वक्त की बहुत फेमस, फतेहपुर सिकरी 1570, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विथ उलेमा, ब्राह्मण्स, जेसुइस्ट priest who were Roman Catholics and Zoroastrians, Parsis. These discussion took place in the Ibadat Khana, and Akbar was very interested in discussing with the priest of other religion, है ना। सो वो इसकी वजह से अकबर थोड़ा सा एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया कि वो अदर रिलीजन्स का भी
डिस्कशन करता था, रिस्पेक्ट करता था, एंड वो जानना चाहता था. ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल. So Akbar's interaction with the people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized, so he understood, what he understood that the religious scholars, ये जो लोग हैं religious scholars है, this emphasized rituals and dogma were often bigots. So he understood that the rituals जो थे and dogma is a statement or interpretation that is declared by the people, this religious people है ना. dogma यानी जो रिलीजियस पीपल थे, साधु संत थे, उन्होंने जो कहा कि ऐसा करना है और वैसी ही प्रथा हो जाती थी, रिचुअल्स हो जाते थे. दैट वाज वेर ऑफन बिगोट. सो बिगॉट मतलब वो लोगों के समझ में नहीं आते थे, है ना. सो दे वेर ऑफन इंडिविजुअल्स, एन इंडिविजुअल हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अनदर्स पर्सनस रिलीजियस बिलीफ. सो ये कैसे थे, बिगोट्स थे, यानी ये दूसरे को मान्यता नहीं देते थे. देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट, एंड ही अंडरस्टूड. अकबर ने देखा कि अरे ये तो जो रिलीजियस टीचिंग है ये क्या है, डिवीज़न क्रिएट करती है ना. तो ये दूसरे धर्म को मान्यता नहीं देते हैं. सो दिस इवेंचुअली लेड अकबर to the idea of sulke-kul, that is universal peace. Okay, so he made an idea, presented sulke-kul yani universal peace. So this idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. So he was thinking that कि उसके रीजन में, उसके राज्य में ये ऐसा डिवीज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने सुल्के-कुल ये टर्म इंट्रोड्यूस किया. And instead it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace. So अकबर honesty, justice और peace की बात करता था. तो ये भी क्यों हुआ कि उसके आसपास जो लोग थे, उसके जो कोर्टियर थे, वो बड़े होशियार थे, बड़े अच्छे थे, है ना. That was universal applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around his idea Sulke-Kul. So this principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. So उसने ये प्रिंसिपल बनाया शांति का, है ना. और ये सिर्फ दो राजाओं ने फॉलो किया, उसका बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ. सो कुछ हद तक जहांगीर और शाहजहाँ जो राजा थे, इन्होंने सुल्के-कुल फॉलो किया, बट औरंगजेब तक ये बात नहीं पहुँची थी, है ना. नाउ सो दैट सुल्के-कुल जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन यू रीड इट. द मुगल एम्पायर इन द 7th सेंचुरी एंड आफ्टर. अब 17th सेंचुरी और उसके बाद के मुगल एम्पायर है. कौन हुए? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. इंटरनेशनल ट्रैवल डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ. सो इस वक्त तक, अकबर के ज़माने तक भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था, बहुत ग्रेट था. जो ट्रैवलर्स आते थे बाहर से, वो वेल्दी कंट्री कहकर इंडिया को, हिंदुस्तान को सिंबल ये करते थे. दे यूज्ड टू नेम ए वेल्दी कंट्री. बट दीज सेम विजिटर्स वेर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड एंड विद द ग्रेटेस्ट अपुलेंस. दी इनइक्वालिटीज़ वेर ग्लैरिंग. बट ये जो ट्रैवलर थे, इन्होंने देखा कि ये तो बहुत रिच कंट्री पर पुअर लोग भी उतने ही हैं, है ना. पॉवर्टी भी है यहाँ पे एंड इनइक्वालिटीज़ भी है. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दी 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ's regime inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number. सो अब शाहजहाँ के रीजन में दी हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार जो थे वो कितने थे? 445 आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000. सो 8000 में से देर वेर ओनली 445, एंड दिस स्मॉल नंबर, ए मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार रिसीव 1.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू.
और शाहजहां के टाइम में ही, अकबर के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गया। दैट द मनसबदारीज विच वॉज गिवन 8,000 सैलरी जितनी उनको बोली जाती थी उतनी मिलती नहीं थी, 61% मिलती थी, उतना ही टैक्सेस जमा हो पाता था। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. Okay, the expenditure benefited the artisans, peasants who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left a very little for investment in the hands of the primary producers. So जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, पीजेंट्स थे, फार्मर थे, उनके पास बहुत कम पैसा रहता था, टैक्स में सारा चला जाता था, सो पॉवर्टी भी बढ़ती गई। The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources. तो उनको तो इतना कम पैसा आता था कि जो आज पैसा आया उस पर खाना खाया, इतना कम पैसा लोगों के हाथ में बचता था। The wealthier peasantry and the artisans groups, the merchants and bankers profited in this economic world. अब वहाँ पे प्रॉफिट में कौन थे? जो ज़मींदार थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, साहूकार थे, बैंकर्स जो इंटरेस्ट पे पैसा दिया करते थे, वो साहूकार। सो इन्हीं लोगों को इकोनॉमिकली अच्छे थे। The enormous wealth and resources commanded by Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. सो ये मुग़ल जो थे, अकबर के टाइम से ये एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मुग़ल जो थे वेल्दी राजा थे, बहुत वेल्दी राजा बन गए, इसलिए उनको बड़े राज होने की वजह से उनको और राज्य का एक्सटेंड करना बहुत आसान था। अब छोटे राज्य को बड़े राज्य पे हमला करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर बड़े राज को छोटे राजा को जीत लेना आसान होता था। सो they constituted new dynasties and held commands of provinces like Hyderabad, Awadh, although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master. So इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद और अवध भी क्या किया था, जीत लिया था। By 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent politics identities. और 18th century में क्या हुआ, ये बाकी के लोग जो थे अलग हो गए। हैदराबाद और अवध जो थे, जो इनके अंडर आते थे, इनकी डायनेस्टी, इनके किंगडम में थे, उन्होंने अपनी डायनेस्टी, सूबेदार जो थे हैदराबाद के वो राजा बन गए, अवध के जो थे वो भी राजा बन गए, नवाब बन गए, और बंगाल के जो थे वो भी नवाब बन गए। उन्होंने इनका जो शासन था इसको हटा दिया, उसको डिनाई कर दिया। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर्स। Now kings and queens, there were several great monarchies, all near contemporaries and in different parts. These included the ruler of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman, 1520 to 1566. This Sultan Suleiman तुर्की का राजा था। So during his rule, Ottoman state expanded into Europe, okay, and seizing Hungary and beseiging ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी भी सुल्तान सुलेमान ने जीत लिया था बाई 1566। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, हिज आर्मीज ऑल्सो सेज्ड बगदाद एंड इराक, ऑल द वे इन टू मोरक्को एक्नॉलेज ऑटोमन अथॉरिटी, so they went up to Morocco. Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. His dominion over the eastern Mediterranean brought the navy into competition with Spain. So this Sultan Suleiman became so powerful that he was having competition with Spain. Spain was a very great army. In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese also. Monarch was given the title of Al-Kunani, so lawgiver. So Al-Kunani, this was the title given to the monarch, Khalifa. Because of the large number of regulations Kunan passed during his reign. So he used to pass several regulations, laws, that was called as Kunan. Okay, these were aimed to standardize administrative procedures
throughout the expanding domain of the empire, especially to protect peasantry from forced labor and extraordinary taxes. So there were many laws made by the kings and queens. Okay, so later in 17th century, when public order declined in Ottoman domain, the region of Suleiman Konani was remembered as a period of ideal governance. So this Suleiman was remembered as a ideal governance because he made some laws for the peasants. Now see, find out the Akbar and other contemporaries, the ruler of England, Queen Elizabeth, the Safavid ruler of Iran, Shah Abbas, and more controversial Russian ruler, Tsar Ivan the Fourth Vassilevich, also called Ivan the Terrible. Ivan was the greatest cruel king. So fighter, that he was known as Ivan the Terrible. So find out the information about this and write the solve the exercise of this lesson.